अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं अबाउट द एडवर्स रिएक्शंस ऑफ द ड्रग। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, दीज आर द हार्मफुल अनप्लीजेंट इफेक्ट ऑफ अ ड्रग एट इट्स therapeutic dose, and to prevent these adverse reaction, we have either reduce the dose of the drug or con- completely stop the drug। ठीक है। अब ड्रग जो है ना कौन कौन से टाइप ऑफ इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो इट प्रोड्यूसेस द थेरापेटिक इफेक्ट्स एंड द एडवर्स इफेक्ट। The therapeutic effects are the desired pharmacological effects of the drug, and there may be primary therapeutic effects or secondary therapeutic effects. Primary therapeutic effects are the effects by which the drug is used primarily, like we use the diuretics, which causes diuretics and control the hypertension. So diuresis is the primary action of the diuretics. इसलिए हमारे साथ secondary therapeutic effects are the other effects of the drug in addition to those by which the drug is used primarily। लाइक अगर हम एग्जांपल ले लें फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन की, तो इसका प्राइमरी इफेक्ट ये है कि इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट द एलर्जिक सिम्पटम्स, बट इसका सेकेंडरी थेरापेutiक इफेक्ट ये है कि इट causes drowsiness by suppressing the CNS, so it is a desirable effect if the patient need rest। अब हम आ जाते हैं अबाउट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग। तो एडवर्स इफेक्ट्स आर द अनडिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग एंड which harms the body, and the adverse effect may be primary adverse effects which occur due to the direct consequence of the primary drug action। ठीक है। like if we use the atropine which causes dry mouth, because atropine inhibit the parasympathetic nervous system and causes decrease in secretion। इसी तरह जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स है, they causes bronchoconstriction by causing smooth muscle contractions। ठीक है। इसी तरह हमारे साथ सेकेंडरी एडवर्स इफेक्ट, सेकेंडरी एडवर्स इफेक्ट आर ड्यू टू द indirect consequence of the primary drug infection, like opportunistic infections which occur because of destruction of the normal flow of the gut due to the use of the antibiotics। इसी तरह अगर हमारे साथ ड्यू टू यूज ऑफ एंटीबायोटिक हमारे साथ क्या होता है, विटामिन डिफिशियंसी भी आती है, तो वो भी हमारे साथ सेकेंडरी एडवर्स इफेक्ट में आते हैं। ठीक है। अब हम आ जाते हैं अबाउट द टॉक्सिसिटी। तो टॉक्सिसिटी क्या है, it is the adverse reaction of a drug at higher doses, and it is sufficient enough in intensity, and it either endanger the life of an individual or it causes permanent or irreversible damage to an organ, like the liver toxicity caused by the overdose of the paracetamol, or the 8 cranial nerve damage that occur from the use of the gentamicin, clindamycin, or tobramycin। These antibiotic causes damage to the 8 cranial nerve, which is a vestibulocochlear nerve, and causes sensory neural hearing loss, either it causes vertigo, etc। अब हम आ जाते हैं about the factors that are involved in the adverse reaction। तो the first one include the patient related factors। तो drug toxicity depends on the age। ठीक है। like infants और old age में हमारे साथ dose adjustment की ज़रूरत होती है। it also depends on the sex, it also depends on the genetic alteration। ठीक है। लाइक सपोज हमारे साथ एंजाइम इनहिबिशन और हमारे साथ अगर हम डोज की ड्रग को बढ़ाएंगे तो टॉक्सिसिटी काज करेगा। ठीक है। इस तरह इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस एलर्जिक रिएक्शन टू द ड्रग, इट आल्सो डिपेंड ऑन डिजीज कंडीशन। ठीक है। Second one is the prescribing and the nursing factors. It include the incorrect dose prescription which causes drug toxicity, incorrect route of drug administration, incorrect duration of the therapy, and incorrect drug combination। The last one are the drug related factors which include the shelf life of a drug। हम देखेंगे कि एक ड्रग जो है ना एक्सपायर तो नहीं, अगर वो एक्सपायर होगा तो वो हमारे साथ टॉक्सिसिटी काज कर सकता है। ठीक है। इसी तरह हमारे साथ ड्रग ड्रग इंटरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। अब हम आखिर में आ जाते हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द एडवर्स रिएक्शन। तो इसमें सबसे पहले आता है टाइप 1 रिएक्शन, टाइप ए रिएक्शंस। टाइप ए रिएक्शंस आर द एक्सटेंशन ऑफ द नॉर्मल फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द ड्रग। ठीक है। और टाइप ए रिएक्शंस जो है ना, दे डिपेंड ऑन द डोज। अगर हम डोज को बढ़ाएंगे तो हमारे साथ जो सिवियरिटी होगी वो भी हमारे साथ बढ़ेगी। ठीक है। एंड मेजॉरिटी ऑफ द एडवर्स रिएक्शन आर टाइप ए रिएक्शंस। लाइक लेट्स सपोज हम कहते हैं कि द ब्लीडिंग दैट occur due to the excessive use of the anticoagulants like warfarin, heparin। ठीक है। इस तरह हमारे साथ अगर अल्फा 1 एड्रेनार्जिक एंटागोनिस्ट हम देते हैं तो हमारे साथ क्या करता है, अगर ओवरडोज एक पेशेंट ओवरडोज लेगा तो उसमें हमारे साथ क्या होगी, पोस्चुरल हाइपोटेंशन होगी। ठीक है। टाइप बी रिएक्शंस, तो टाइप बी रिएक्शन में हमारे साथ इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस आता है। ठीक है। और एलर्जिक रिएक्शंस आता है। जो इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन है, इट इज़ एन अनयूजुअल रिस्पॉन्स टू अ थेरापेटिक डोज ऑफ अ ड्रग। और इसमें डिफरेंस ये है कि जो इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन है ये हमारे साथ क्या है, नॉन इम्यूनोलॉजिकल है, नॉन इम्यूनोलॉजिकल।
हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, और जो एलर्जिक रिएक्शन है इट इज़ इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, ठीक है, टू अ ड्रग और इट्स मेटाबोलाइट। लाइक इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन की एग्जांपल अगर हम ले लें क्लोराम्फेनिकोल, तो कुछ चिल्ड्रंस में ये हमारे साथ क्या करता है, एप्लास्टिक एनीमिया काज करता है, ठीक है। इस तरह हमारे साथ अगर जो टॉपिकल एंटीबायोटिक्स है कुछ वो भी हमारे साथ स्किन एलर्जी काज कर सकते हैं, ठीक है। टाइप सी रिएक्शंस, तो टाइप सी रिएक्शन occur because of the excessive or chronic use of the drug which causes damage to the body organ। लाइक अगर हम ले लें अगर एनाल्जेसिक नेप्रोपैथी जो कि काज होते हैं बिकॉज ऑफ द prolonged or chronic use of the analgesics, and analgesic nephropathy occur mostly in the female, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अबाउट द टाइप डी रिएक्शन। टाइप डी रिएक्शंस इंक्लूड द कार्सिनोजेनेसिस एंड द teratogenicis, and these are the delayed type of reaction that occur after years or months, ठीक है। अगर हम एग्जांपल ले लें teratogenic ड्रग की तेलिडोमाइड जो कि प्रीवियसली यूज होता है, ठीक है, और ये हमारे साथ क्या कौन सा ड्रग है, teratogenic है बिकॉज इट causes the limbal abnormalities, ठीक है, there is mal development of the limbs occur because of the use of thalidomide, और ये अब हमारे साथ बैन हो गया है, ठीक है। टाइप ई रिएक्शंस आर द विथड्रॉवल रिएक्शंस आफ्टर ड्रग। टाइप ई रिएक्शन में ये है कि एक पेशेंट लॉन्ग टाइम के लिए ड्रग यूज़ करे, वो सडन यूज़ को जो है ना स्टॉप करे, तो हमारे साथ जो अपोजिट सिम्टम्स है वो प्रोड्यूस होते हैं, लाइक सडन स्टॉपिंग ऑफ द स्टीरॉयड ड्रग्स आफ्टर लॉन्ग टाइम यूज़, ठीक है। तो हमारे साथ क्या करता है, ये वो एड्रिनल इनसफिशिएंसी काज़ करता है। इसी तरह हम जो ओपिएट्स यूज़ करते हैं लाइक मॉर्फिन लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है, और अगर एक पेशेंट जो है ना वो उसको सडनली स्टॉप करे तो उसमें विथड्रॉवल सिम्पटम्स डेवलप होंगे, लाइक पेशेंट को पेन होगा, ठीक है, डिस्कम्फर्ट होगी, इंसोम्निया होगा। तो इट वाज़ ऑल अबाउट द एडवर्स रिएक्शंस।